अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मसाला। इसके लिए हमें चाहिए हाफ केजी मटन, कोतमीर, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, सॉल्ट, करी लीव्स, 2 अनियंस स्लाइस्ड, आलू राउंडल्स में, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑयल। हम कुकर में बनाएंगे। कुकर गर्म होने के बाद एक 5 to 6 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, तेल गर्म होने के बाद ऐड द अनियंस एंड कीप सॉटेइंग देम टिल गोल्डन ब्राउन। Once they are sauteed, add the curry leaves. Fry the onions till golden brown. Once that is done, add the ginger garlic paste. Mix well. Saute for around 5 minutes till the raw smell of the ginger garlic paste goes. If you find it is sticking to the bottom, you can add a little bit of water, 1 to 2 tablespoons of water, and keep stirring. Now it's time to add the spice powders, chilli powder, turmeric powder, and salt. Mix well and keep sauteing till the oil leaves the sides. Keep on low flame. Sauteing is very important here. Now it's time to add the mutton. Coat the mutton well with the masala. Mix well and again saute till the oil leaves the sides. Keep the flame on sim. Add coriander leaves. भूनना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। मसाले का टेस्ट ही बदल जाएगा if you saute well. Now it's time to add the potatoes. I have taken 1 potato. राउंडल्स में कट किया हुआ है। मिक्स वेल अगेन। यू कैन सी द ऑयल लीविंग द साइड्स। Add 1 cup of water. Mix and close the lid. Cook for 4 whistles. And later when the pressure is down, completely down, open the lid and check. If you find it too liquidy, you can just keep it on the gas and cook for a bit more. The mutton is done, the potatoes are done. If this consistency is enough, then you can off the gas. Else you can keep it on for some more time. This is very good with chapatis, chawal ki roti, ghee rice, and especially as an accompaniment to dal. This is a final look. Do try it out. Thank you for watching.